라이프를 착용하세요. Hey guys, good evening. तो आज हम वहीं आए हैं जहाँ BTS पॉपअप हाउस के लिए आए थे सिंसादोंग। आज बहुत ही ज़्यादा स्पेशल डे है बिकॉज आज हम न्यू फ़ोन ले रहे हैं और उस फ़ोन का आपको जल्दी पता चलेगा कौन सा फ़ोन ले रही हूँ। अभी जाना है एप्पल स्टोर। मैंने ये फ़ोन अपना प्री ऑर्डर किया था 13 को, आज एक हफ्ते बाद मिल रहा है और साउथ कोरिया में आज रिलीज़ हो रहा है। 13 को प्री ऑर्डरिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने रात में 12 बजे ही ऑर्डर कर दिया था, तब जाके मुझे पिकअप का ऑप्शन मिला, वरना सिंसादोंग में एप्पल स्टोर में पिकअप का ऑप्शन नहीं मिलता ईजिली। प्री ऑर्डर के बाद मुझे लग रहा है कितने महीनों बाद ये फ़ोन आ रहा है मेरे पास। मैं बहुत एक्साइटेड थी। बाय द वे आज बहुत ज़्यादा ठंडा है। लेट्स गो। 여기서 받을 수 있고 들어갈 수 있는데 어떤 게 더 좋을까요? 이쪽으로 들어가시면 되고 앞에 분의 거리 보기 한번 부탁드릴게요. आप वहाँ से भी पिकअप कर सकते हैं। आप अंदर जाना चाहते हैं स्टोर में तो आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा। अंदर जो भी अटेंडेंट हैं सारे एप्पल स्टोर के, तो वो एक एक करके बाहर आ रहे हैं और जो उनको अटेंड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को। तो मेरे लिए भी कोई आएगा और मुझे अटेंड करेगा और मेरा QR कोड देखेगा, उसी से मेरे को फ़ोन मिल सकता है। 이어서 도와드릴게요. 소는 야다v 오셨어요? 아, 네. 이거 오늘 나왔어요? 네, 맥주 오늘 나왔어요. 이거 보셔도 괜찮아요. 아, 네. Oh my god, it's so big. ये आ रही है हुआ है। Wow, I'm so happy कि पहले दिन मैं लेने आई हूँ। Wow, so mini iPhone 12, iPhone 12 Pro and oh my god, I'm so happy. और ये इसकी कैमरा क्वालिटी 영상 진짜 잘 나와요. 아, 네, 사진도 네. 너무 잘 나와요. 그래서 이거 샀어요. 저만 쫓고 있으세요. 감사합니다. 네, 픽업 사인이에요. 한국어에서 너무 잘하시는데요. 아니에요. 감사합니다. 네, 감사합니다. 안녕하세요. फाइनली पिकअप हो गया है। अब घर नहीं जाना अभी। नतालिया आई डोंट नो कहाँ रह गई है। उसने मुझसे कहा था मैं आऊँगी टाइम पर। Hello, I'm here. I'm You are late, but I'm late. here. You are late. I was running. For your iPhone. And I was waiting for her. But still, I picked my phone. It was so quick. It feels so good. But my hands were so cold that time. And I was like, we will go to cafe and open this box. You choose. I mean, both are coffee shops. Just go in, honey. I'm fine with anyone. Thank you. Hello. Oh, I was like, Oh, green matching. happy birthday. This is mint green tea. No. Jeju green tea. Kick. You. Milk tea. My is orange chamomile. Go stronger, stronger. Looks good. It's heavy. This is unboxing time. My new iPhone. Are you ready? Oh. Let me unbox this. Are you ready? Oh, are you ready? Okay, 1, 2, 3. Yay, my new phone. Oh my god. I chose this color because it was like new release. And lightning cable and SIM card ejector and other thing and a sticker. Wow. Let me turn this on. Hello. Does it have battery? It should have. Yeah. Hello. Say 안녕하세요. Hola. Namaste. Namaste. 한국어 아니에요? English. South Korea. Okay. Quick start. I want to. Set up. Then, oh, there. Oh yeah. Oh, my old one. Thank you. Oh my god, oh my god, oh my god. Ulala. Oh wow. 또르르. My face.
continue. Face ID is now set up. Wow, it was so quick. Sonal. Wow, I love the big screen and this camera. 3 camera. We have telephoto, wide angle and ultra wide angle, and we have LiDAR. Disagree. Hello. Don't be slow. You are new. What are you doing? Enter iPad. Sonal's iPad. Oh, they know. Light. Before you had to like connect it to your computer. Yeah. Patient, my love. Oh yes. Did you do that? I don't know. We need to take you back. No, I don't want to. Talk louder. They're so loud. And I also bought USB-C 20 watt power adapter, and it was around 25,000 Korean won. Bought this because I don't have any USB-C adapter. Oh, nice. Oh, it's on. Oh, sympathizers. Stop. I saw a picture of you there. Oh, really? Yeah. Oh, here. No. I think it's. Oh, okay. Open with your face. Oh, wow. Where is Instagram? Oh, Instagram we have it. Welcome to App Library. Thank you. Love for you. Hello. First picture. What's going on? What? Oh, what? You have everything. Oh my god. I already got screen protector and my phone cover from same company. This one is back cover and this one is screen card. This thing so we can put correctly, and then this is screen protector and then dust sticker and everything, so we have to clean this first. Hey, stop it. Stop it. And this is a screen card. This done? Oh. My cover. New. Show me more. Show me more. This is my charger. I'm so happy. So creepy. Move more, your face. Hey everybody, welcome to today's video. Oh my gosh, so much. My head hurts from down. Namaste everyone. I love you guys. You all are in my next video. Thank you. And now we are going to taco place. So this is new iPhone quality. Oh, it's so clear. It's clear, clean, everything is sharp. We are so fun.
We're walking side by side, filming this. It's so heavy. I thought it will be light, but the quality is super good. और मेरा ये छोटा सा सेटअप, ये मेरा ट्राइपॉड। क्रिसमस आने वाला और मेरे पीछे आप ये इतनी डेकोरेशन देख सकते हैं। मुझे फ़ोन मिला था, 12th कंप्लीट की थी और तब मुझे नया फ़ोन मिला था सैमसंग का, छोटा सा मॉन्टी नाम था। बहुत अच्छा फ़ोन था, मुझे अच्छा लगा था। उसके बाद 2013 में मैंने न्यू फ़ोन ख़रीदा अपने पैसे कलेक्ट करके। मुझे एप्पल का चाहिए था। ये है iPhone 4, ये ख़रीदा मैंने। मेरी मम्मी की एक फ्रेंड थी जान पहचान की, उनके बेटे की एप्पल और मोबाइल की शॉप थी, तो कोई स्कीम चल रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया। मैंने कहा अरे वाह, मेरे पास पैसे भी हैं, चलो ख़रीदते हैं इसको, स्कीम चल रही है। तो मैंने वो सैमसंग का फ़ोन देखकर इसको ख़रीदा और पैसे वैसे मिला के थोड़े बहुत। उसके बाद मैंने फिर ख़रीदा 2016 जनवरी में, मेरे पापा ने मुझे ये दिलाया एप्पल iPhone 6s, तो मैं बहुत खुश हुई थी उस टाइम। और इसके बाद मैंने अब ख़रीदा 2020 में, तो लगभग 5 साल में मैंने ये 12 Pro Max अब ख़रीदा ये वाला। 5 साल में मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे नया फ़ोन ख़रीदना चाहिए था, बट इसकी बैटरी काफ़ी ख़राब हो रही थी। 5 मिनट में इसकी बैटरी चली जाती है, चाहे 100% चार्ज किया हो। मैंने सबसे बड़ा रीज़न मैंने इसलिए ख़रीदा क्योंकि फ़ोन हर जगह जाता है हमारे साथ, और कैमरा एक्स्ट्रा ले जाना डेलीकेट सा लगता है कि कहीं टूट ना जाए, और उसके लिए एक्स्ट्रा स्पेस क्रिएट करनी पड़ती है। एंड में आते आते मुझे लगा कि ख़रीद लेना चाहिए, पर ऐसा नहीं है कि जैसे ही मैंने सोच लिया वैसे ही फ़ोन ख़रीद लूँ। मेरे को पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं धीरे धीरे, और ये वाला फ़ोन मैंने अपने सेविंग्स में से ख़रीदा है। एंड मैक्स प्रो इसीलिए चूज़ करा क्योंकि इसमें कैमरा क्वालिटी काफ़ी हाई है और 4K वीडियो, डोल्बी विजन, लाइडार ये सब है, तो इसलिए मुझे लगा यही जब ले ही रहे हैं तो अब ढंग का ही ले लेते हैं। और थैंक यू सो मच अभी तक वीडियो देखने के लिए, अभी तक मेरी स्टोरी सुनने के लिए। अपना ख्याल रखिए, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं इंडिया में, प्लीज़ घर में रहिए, अपने मम्मी पापा से बोलिए घर में रहें अभी, और बस बाय।